हेलो लिसनर्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोशोलॉजी कंप्लीट। और जितने भी जिसके लिए भी आपको यूज़फुल लगे तो हम लोग पूरी सोशोलॉजी कंप्लीट कर देंगे आज से। और हम लोग कई पार्ट में सोशोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आज का जो बेसिकली वीडियो होने वाला है ये केवल इंडेक्स के लिए है कि हम लोग अपना कंटेंट क्या रहने वाला है, कि हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे, उसका कंटेंट है ये। तो शुरू करते हैं। तो पार्ट वन में हमारा पहला चैप्टर होगा सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके सब टॉपिक्स होंगे सोशल साइंस एंड कॉमन सेंस, scientific observation, basic technique of the scientific method, the science method of investigation, a research exercise, normative method of investigation, sociology as a science, the development of sociology, perspective in sociology, the evolutionary, the functionalist, the interactionalist perspective, the conflict perspective, comparison of the perspectives, some study suggestions। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी। और इसके बाद हम लोग इसके सब टॉपिक्स पढ़ेंगे fields and the field of the sociology, method and technique of sociology research। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, लेबोरेटरीज एंड द फील्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, द प्रॉब्लम ऑफ द सैम्पलिंग, disagreement in science, pure and applied sociology, popular sociology, role of the sociologist as a researcher, sociologist as a policy consultant, sociologist as a teacher, sociologist as a technician, sociologist as a social action। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी का सब टॉपिक्स होगा द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, यूथ ऑफ कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, करियर्स इन सोशोलॉजी। और फिर पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे द कल्चरल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, जो हमारा दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। वो हमारा होगा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर एंड सोसाइटी, सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, नॉन ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एज अ सिस्टम of norms, folk ways, morals, institution, law, values, or structure of culture, culture traits, complexes, subcultures and countercultures, cultural integration, cultural relativism, real and ideal culture, personality and anthronisms, effect of anthronism, Xenosystem, a culture of human adjustment, cultural and biological adjustment, cultural and social adjustment। और फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, personality and socialization, the meaning of the personality, factor in the development of personality, the biological inheritance and personality, physical environment and the personality, culture and personality, socialization and the self, group experience and personality, unique experience and personality, theories of the personality development, Cole and the looking glass self, meet the generalized other, Freud and the antisocial self, erections, the eyesight, stages of life, pigment and the developmental learning, importance of the self image। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 5, रोल एंड द स्टेटस, सोशलाइजेशन थ्रू द रोल एंड स्टेटस, सोशल रोल्स एंड पर्सनैलिटी, रोल सेट, रोल बिहेवियर and ascribed and achieved status and role, ascribed status and role, achieved status, role, status inconsistency, role personality and true personality, role strain, inadequate role preparation, role transition difficulties, role conflict, role failure, the final status death। और फिर पढ़ेंगे चैप्टर 6, सेक्सुअलिटी एंड सेक्स रोल्स, sexual foundation of the human social life, continuous social sexuality, variety and continuity, peability of sex drive, sex difference, changing sex rules, factor in sex change, Marxist analysis of sexism, future sex role, androgyny, possible or desirable future trends। और चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे सोशल ऑर्डर एंड सोशल कंट्रोल सोशल कंट्रोल थ्रू सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल थ्रू
social pressure, social control through force, social control, social, sorry, social control through force, situational determination of behavior, social deviation, characteristic of deviation, theories of deviation, फ्रीडम एंड ऑर्डर। फिर पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर इसके अंदर हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे ग्रुप एंड एसोसिएशंस। इसके सब टॉपिक्स होंगे ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, some kind of group, in the group and the out group, primary and secondary group, the secondary group trend, the contribution of the gases, gases scrapped, persistence of the primary group within a secondary group, dynamics, voluntary association, structural features, function of the voluntary association, participation in voluntary association, theoretical self-help groups। और फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 सोशल इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। फिर इसके और पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशनाइजेशन, इंडिविजुअल रोल इन द इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, instrumental trait, cultural symbols, codes of behavior, ideologies, institutional function, manifest function, lenient function, interrelationship of the institution, institutional autonomy, intellectual and bureaucrats, role of the intellectuals, role of the bureaucrats, कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूशन। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 10 द फैमिली, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, कंपोजिशन ऑफ द फैमिली ग्रुप्स, मैरिजेस, variation in family structure, function in the family, the sexual regulation, the reproductive function, the socialization function, the affective function, the status definition function, the protective function, economic function। फिर पढ़ेंगे द अमेरिकन फैमिली टुडे, changing family structure, changing family function, family violence, interrelationship with other institution, the future of the family। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 11 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंड द सोसाइटी, रिलीजियस एज एन एवोल्यूशनरी स्टेज, रिलीजियस एज अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ सोसाइटी, religious as a opiate of the people, religion as a dynamic force structure of religion associated, alopecia, cult and sect dominations, or manifest and latent function of the religion, manifest function, latent function, interrelationship and the other institution, relation of the relation regions and the family, religion and the economy, religion and the government, religion and the social action, religion and social stratification, ethnicity and religious stratification, class, status change, contemporary trend and religion, conflict and the ecumenicity, persistence of religion institution। और फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 के अंदर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके हम लोग सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द अमेरिकन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल एजुकेशन, अदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन, नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस एजुकेशन, contest versus sponsored education mobility, the school as a social system, interaction in the school, student status system, student cliques, manifest function of education, latent function of the education, creation of adolescence, weakening of the parental control, perceiving the class system a haven for dissent, and interrelationship with the other institution, education and the family, education and religion, education and the polito-economic institution, educational autonomy, American education and the success and or failure, the decline of learning, social class difference in learning, social and the technological as institution, the irresponsibility of science and technology,
फिर पढ़ेंगे चैप्टर 13 पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पैटर्न मिक्स्ड इकोनॉमिक कम्युनिज्म कम्युनिस्ट सोसाइटी द फासिस्ट सोसाइटी पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री fascism communism and mixed economy compared manifest and the latent function politic economic conflict and corporation welfare and conflict inflationary trend the underground economy ideology and the business government relationship major economic theorist ideological change power and the government organization power the power allied the power of the unorganized masses direct political power of the masses query con and the disruption judicial and bureaucratic activism the emergent American consensus fact or illusion interrelationship with the other institution फिर पढ़ेंगे पार्ट 4 के अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन फिर इसके जो चैप्टर 14 होगा वो होगा सोशल क्लास व्हाट इज सोशल क्लास determinants of the social class, self-identity, and the class consciousness, family pattern, status symbols, size of the each social class, blue collar and the white collar status, social class as a subculture, the culture of the poverty, social class and social participation, significance of social class, determination, life changing happiness and social class, cultivation class, anthropocentrism, definition the conventional majority morality है यहाँ पे explaining many other group differences shaping political attitude and lifestyle getting the dirty work done fitting into the better spots function and the conflict theory of the social class the new class further of the class the future of the class from the proletariat to status seekers फिर पढ़ेंगे चैप्टर 15 सोशल मोबिलिटी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सब टॉपिक्स नेचर एंड द सोशल मोबिलिटी इंडस्ट्रियल एंड ग्रुप मोबिलिटी डिडक्शन ऑफ द सोशल मोबिलिटी cost and the gain of the mobility determinant structural factor individual factor interaction of all factors mobility prospect mobility of women societal mobility of developing countries what about the poverties mobility or equalities फिर पढ़ेंगे चैप्टर 16 race and ethnic relation racial and ethnic classification the scientific view of the of race difference physical race difference are the unimportant amalgamation and assimilation, prejudice and discrimination, genocide, the ultimate form of discrimination, approaches of ethnic policies, the industrial right approach, the group right approach, the implementation of ethnic group right, separation and territorial based minority Native American, the Hispanic American minority mobility in the United States, similarity in the minority mobility, black mobility, the underclass revisionist through the minority policies. पार्ट 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोशल चेंज एंड सोशल पॉलिसी पॉपुलेशन चेंज changing population composition migration push-pull and channels, international migration, internal migration, social and the cultural aspect of the population change in the death rate, age at marriage and sex ratio, social status and the birth rate, the Catholic and the population controversy, the Matthews and the methods of population, the Domesday debate, democratic translation theory, the Marxist critics, population policies, pro-natal policies, anti-natal policies, effect of population stabilization prospect for future west and the north west compared चैप्टर 18 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे द चेंजिंग कम्युनिटी द रूरल कम्युनिटी द ट्रेडिशनल करेक्टरिस्टिक ऑफ द रूरल लाइफ द रूरल revolution the urban community the development of the cities the
anti-urban biases, ecological pattern of the cities, the population turnaround, urban ecological process, urban life and personality, a rural and the urban convergence, the town, the rural non-farmers, the federal rural urban, the distinction, the future of cities, the inner city underclass, the new town movement, city planning. फिर पढ़ेंगे चैप्टर 19 कलेक्टिव बिहेवियर एंड सोशल मूवमेंट, नेचर ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर, crowd behavior, contagion theory, convergence theory, and emergent non-theory, limitation on the crowd behavior, some form of crowd behavior, mass behavior, the rumor, the fad or fashion, the chillies, mass hysteria, disaster behavior, public and public opinion, measurement of the public opinion, manipulation of public opinion, social movement, theories of the social movement, kind of the social movement, life cycle of the social movement. चैप्टर 20 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोशल एंड कल्चरल चेंज, थ्योरीज ऑफ द सोशल चेंज, एवोल्यूशनरी थ्योरी, सेलेस्टियल साइक्लिकल थ्योरी, functional and conflict theory of the change, process of the social change, discovery, invention, diffusion factor in rate of change, physical environment, population, class, isolation and context, social structure, attitude and values, perceived needs, the cultural base, resistance to and substance of the social change, specific attitude and values, demonstrability of invention, compatibility with existing culture, cost of the change, role of the change, consequence of the change, side effect of the discovery, invention, unequal rate of the change, social change and the social problem, disorganization and demoralization, a pain and gain of change, social planning, can change be directed। और इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा हमारे सोशोलॉजी का। उम्मीद है कि आप लोगों को इंडेक्स समझ में आया हो।